Assalamualaikum, this is Naeem Khiyani from the Art of Investing. Thank you so very much. हमारे सारे प्रोग्राम्स को पसंद करने का बहुत ज़्यादा इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है हर जगह पे और काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें हमें अब समझ आना शुरू हुई हैं कि जो पास 3-4 महीनों से जो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा था उसकी एक्चुअल रीजन क्या है. सो वी गोना डिस्कस कपल ऑफ दोज आइटम्स हियर एज वेल. लेकिन ओवरऑल आप जो है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा उसका एक भी इवेंट, क्योंकि दिस इज ऑल इम्पैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट हियर इन कनाडा एंड इन यूएस एंड ओवरऑल वर्ल्ड एज वेल. So let's start our program. पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट ओवरव्यू, क्या चल रहा है. S&P इंडेक्स इस टग ऑफ वॉर चल रही है इस वक्त, और जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में कहा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अनसर्टेनिटी की वजह से देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग हैपनिंग. S&P 500 वीकली परफॉर्मेंस 1.2% का इंक्रीज रहा. रीजन बिहाइंड इज जो की ड्राइवर रहे वो AI ऑप्टिमिज्म, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एंड स्टेबलाइजिंग बॉन्ड यील्ड्स. ये एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है इस वक्त जापान से भी कि दे आर मैच्योरिंग देयर बॉन्ड्स राइट नाउ. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज impacting in S&P and in US and stock market. TSX Composite 1.8% से ऊपर रहा. They are surging due to surging gold price and energy sector strength. हम थोड़ी देर में energy sector strength की बात भी करेंगे. Nasdaq up by 2.1% and is blowout earning from semiconductor giants. So ये सारी चीजें जो है वो factors बन रही हैं इस वक्त जो indexes को ऊपर लेके जा रही हैं. So we're going to discuss this in detail. नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट को, पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन विल गो इनटू द टीएसएक्स मार्केट. क्या रहा इस वीक? एक तो ग्रीनलैंड रिलेटेड की न्यूज़ की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो एज आई मेंशन के इट इज़ गोइंग टू बी चेंज और चेंज हो रही हैं. जनवरी के एंड तक अगर यूएस का जो है वो इंटरेस्ट कट नहीं आया तो यू विल सी गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग अप अ लॉट. सो गोल्ड अभी 4800 पे तो जा चुका है. हम पिछले 4 महीनों से गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज़ गोना हिट 5000. हमारी प्रेडिक्शन थी कि बाय फरवरी मार्च टाइम फ्रेम तक 5000 हिट करेगा, बट इट इज 4800 राइट नाउ. हाउ इज गोना वर्क, कैसे ऊपर जाएगा? आई बिलीव इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलोंग विद अगर इंटरेस्ट रेट का कट आता है यूएस की तरफ से तो विल सी के कैसे होता है. टीएसएमसी और एनवीडिया, अगर आपको टीएसएमसी का नहीं पता तो टीएसएमसी एक्चुअली एनवीडिया के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है. टीएसएमसी कंपनी है ताइवान की. TSMC जो है वो इज बीन वन एंड सोल कंपनी जो चिप्स प्रोड्यूस कर रही है, नॉट ओनली फॉर एनवीडिया बट फॉर एप्पल, फॉर गूगल, फॉर अदर, फॉर टेस्ला एज वेल. सो दे आर वेरी बिग कंपनी एंड दे आर ताइवान बेस्ड. दूसरा अगर आप नोट करें तो इट्स रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड 35% जंप इन प्रॉफिट and announced a massive $56 billion capital expenditure plan for 2026. So that's what TSMC is doing. Even though ये कनाडा और यूएस की कंपनी नहीं है, but it is directly linked with all these big giants right now. अच्छा, इससे क्या हुआ कि जो AI बूम चल रहा है इस वक्त वो इस वक्त पीक पे है, and that is dragging Nasdaq and ASML. ASML क्या है? ASML AI की चिप्स बनाता है for TSMC, and TSMC is providing overall semiconductor chips to NVIDIA. So they are all interconnected. ASML अगर काम नहीं कर रहा तो अगर फॉर एग्जांपल ASML बंद हो जाता है तो NVIDIA is done and TSML is done. And ASML को अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी है. अब आप ये कनेक्शन देखें, TSMC connected to NVIDIA, TSMC connected to ASML, and ASML को जो मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए होता है that is provided by China. So this is how it is connected, right? So अगर ASML बंद हो गया, TSMC बंद हो गया, अगर चाइना ने माल सप्लाई करना बंद कर दिया तो definitely they are in trouble. So which is why there are all of these geopolitical situation being happening right now, और जिसकी वजह से हमें सारी चीजें देखने को मिल रही है. हम थोड़ी देर में एनवीडिया का स्टॉक भी डिस्कस करेंगे. दूसरे पॉइंट पे आते हैं अल्फाबेट. अल्फाबेट विच इज गूगल सरपास द 4 ट्रिलियन मार्केट कैप. पहले एनवीडिया ने 4 ट्रिलियन मार्केट कैप जो है वो सरपास किया था, अब गूगल ने सरपास किया है. एंड ड्यू टू विच, क्योंकि एप्पल जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है गूगल जेमिनाई एआई इनटू सीरी. ओपन एआई जो है वो पहले कर रहा था, लेकिन नाउ गूगल जेमिनाई एआई इज डूइंग इट विद
with Apple. This is a big news for Alphabet, and which is why their stock is going up as well. Morgan Stanley and Goldman Sachs. अच्छा हुआ क्या? Retail banking, these investment giants ये 4% की रैली कर रहे हैं for a couple of weeks or so, और इनकी सक्सेस जो है दैट इज डील मेकिंग एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेट इशुएंस, जिसकी वजह से जो है वो 4% इनका इंक्रीज यहाँ पे आया है. चैलेंजेस क्या हुआ है ओवरऑल यूएस मार्केट में? जेपी मॉर्गन, कैपिटल वन, दे फेस द प्रेशर आफ्टर प्रपोज 10% कैप ऑन क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट. अब आप ये एक स्टेटमेंट आया था लास्ट वीक जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन जारी किया था कि 20% क्रेडिट कार्ड के यूजुअली इंटरेस्ट रेट होता है, और बैंक्स को उन्होंने एक मेमोरेंडम जारी किया कि व्हाई डोंट यू लुक इनटू फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 20% चार्ज 10%, ताकि उससे जो कंज्यूमर डेट है वो जरा कम होना शुरू हो जाएगा. बट दैट पुट अ नेगेटिव प्रेशर ऑन द बैंक, विच इज व्हाई यू आर सीइंग राइट नाउ दैट रिटेल बैंक्स आर इन ट्रबल. अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स चेक एनवीडिया स्टॉक. एनवीडिया का स्टॉक इस वक्त है $184.73. TSMC को प्रॉफिट हुआ है विच इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंपैक्ट्स एनवीडिया एज वेल, विच इज व्हाई अगर आप एनालिस्ट की इस वक्त प्रेडिक्शन देखें तो दे आर एट स्ट्रॉन्ग बाय, इवन दो एनवीडिया इस वक्त 184 पे, बट दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय क्योंकि बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन दे विल गो अप. सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि एनवीडिया के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें they said that instead of going into more processes we will be getting into more data storage, which is why जो data storage companies थी they are going up, Westgate and all that, but Seagate as well. So look for Nvidia going forward. It is going to get very strong as we go further. अच्छा जी, next हम आते हैं ओवरऑल मार्केट कंडीशन यूनाइटेड स्टेट्स की क्या रही. यूएस मार्केट पहले तो एक सिग्निफिकेंटली वोलेटाइल और मिक्स परफॉर्मेंस रही, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं. जियोपॉलिटिकल और पॉलिसी न्यूज़ की वजह से डाउ वाज डाउन बाय 870 at one point. So 870 पर जैसे वो न्यूज़ मार्केट में आई डाउ वेंट डाउन बाय 870, और जो टैरिफ थ्रेट्स जो मिल रही हैं इस वक्त यूएस और यूरोपियन टेंशन में, वो भी ड्राइव कर रही हैं सारे रिस्क के एसोसिएशन को. अच्छा, यूएस जब स्केल बैक कर रहा है टैरिफ प्लान से, सो नाउ डाउ जोन्स और S&P दे आर टर्निंग इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि जब टैरिफ इन्वॉल्व होता है, जब आपकी जो है यूरोपियन मार्केट की वजह से टेंशन शुरू हो जाती है, सो नाउ यू कैन सी इट इज ऑल इम्पैक्टिंग बैक टू S&P एंड इंडेक्सेस हियर एज वेल. अर्निंग इम्पैक्ट क्या रहा? जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फ्रॉम सेलेक्ट कंपनीज. पहला Halliburton, United Airlines, they were getting very strong sentiments there, और क्योंकि अब एयरलाइन मार्च ब्रेक आ रहा है, there are a lot of travel been opening, so United Airlines is in profit right now. Some large firms such as Netflix, Kraft Heinz, they lagged due to softer growth expectations. So इनके साथ काफ़ी बड़ी growth expectation थी, but they didn't grow that much. So which is why there was some impact overall, and that impacted index as well. कैसे रहा? Major index fared midweek sell-off, right, followed by partial recovery. और इससे क्या हुआ कि जो small cap stock है, जो Russell 2000 है, एक और भी index है Russell 2000 जिसमें छोटी कंपनीज वहाँ पे होती हैं, it outperform with the broader market, right? So ये सारे जो है वो कनेक्टेड होती हैं इंडेक्सेस से, एंड दैट्स हाउ वी हैव सीन. मार्केट सेंटिमेंट क्या रहा? ऑप्टिमिज्म रहा. अर्ली टर्मोइल, इन्वेस्टर्स एम्ब्रेस रिलीफ बट रिमेन वे ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क, और इसकी वजह से काफ़ी जो है वो चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे. और मार्केट कंडीशन वाज ओके, लेकिन जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था दैट इज नॉट अप टू द मार्क. ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं कौन कौन विनर रहे. एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में Halliburton, HBL, they beat expectation. They strong energy demand narrative, or this is why they are into a very good shape. United Airlines, as I mentioned, they performed very solid, and they tied to travel recovery and earnings surprises. So that's what we have seen. Small caps 2% weekly का increase रहा, जिसमें छोटे जो companies हैं, that's what part of it. नेटफ्लिक्स और क्रांस जो है वो लैग रहे ओवरऑल, और थीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी सेंसिटिव स्टॉक्स, एनर्जी दे रैलीड ओवरऑल मैक्रो लेवल पे, और मिक्स रिजल्ट रहा हमारा चिप्स के स्टॉक्स पे, विच इज मोर सेमीकंडक्टर, राइट. अच्छा जी, टोरंटो की बात करते हैं. TSX जो है कमोडिटीज
considered as a safe haven. Gold की price आपने देखी. There are a lot of folks who are investing in gold. In fact, TD जो अपना उनका precious metal का एक concept है जो वो बेचते हैं, TD के पास इस वक्त जो है वो gold बेचने को नहीं है. This all sold out. अगर उनकी website पे जाके देखेंगे, you won't find anything right now. So they are all sold out. अच्छा जी, gold and minerals हमने बात की. अभी record high gold गया. सेफ हेवन कह रहे हैं गोल्ड को, विच इज ट्रू एट दिस पॉइंट. लेकिन कब तक जाएगा वी डोंट नो, राइट. 5000 की तो प्रेडिक्शन थी पिछले 2-3 महीनों से, लेकिन ये कब जाके ये होगा. 4800 पे एज अ सेट ऑलरेडी हो गया है, लेकिन व्हेन एग्जैक्टली इज गोना हिट 5000 वी डोंट नो, राइट. It may come down. There are a lot of speculation that it will come down as well, but we'll see how exactly the market will react. Energy sector, Enbridge, right? It's doing well. क्रूड जो है वो ऊपर आया, $60 पर बैरल हो गया, क्योंकि ईरान के जो थ्रेट्स एंड यूएस सैंक्शंस की वजह से वी हैव सीन सम अपलिफ्ट हियर एज वेल. Shopify, right? Shopify is doing very well. It remains a core driver of Toronto Stock Exchange. Mid-week में Shopify की ग्रोथ जो है वो काफ़ी नज़र आई है. इन्वेस्टर काफ़ी इसको जो इन्वेस्ट कर रहे हैं Shopify के ऊपर, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं Shopify ने AI इंजन भी इनेबल कर लिया है अपना. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन Shopify सर्च इंजन, और प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी ईजी हो गई हैं Shopify में अब मैनेज करना. चैलेंजेस क्या रहे मार्केट में? मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटो 11.2% एवरेज इम्पैक्ट रहा. स्ट्रक्चर मार्केट जो है वो यूएस टैरिफ रेट की वजह से स्टिल इन क्वेश्चन राइट नाउ. कैसे चलेगा? देयर आर लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स बीन आउट देयर कि कनाडा की जो है वो गाड़ियां नहीं चाहिए यूएस को. अब कब तक जो है वो ये मैनेज होगा? कैसे कैनेडियन ऑटोमोबाइल मैनेज करेंगे? एक और भी स्टेटमेंट आया था कि चाइना की शायद गाड़ियां यहाँ पे आना शुरू हो जाएं, राइट. क्योंकि जो टैरिफ था, सॉरी जो ड्यूटी थी उस वक्त 100% थी, वो 100% से डाउन हो गया. अगर 6% हो गई, दैट्स अ न्यूज विच इज बीन सर्कुलेटिंग इन द मार्केट. देन चाइना की जो BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी एट अ वेरी लो कॉस्ट, राइट. सो एज कंपेयर टू टेस्ला इट्स मच चीपर एंड इट हैज मच मोर फीचर्स देयर एज वेल. अच्छा जी, कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं यहाँ पे. एग्निको ईगल माइंस, ये जो अभी हमने डिस्कस किया गोल्ड का, 294 इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस है. एनालिस्ट की प्रेडिक्शन बाय है. इट इज गोइंग अप क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद गोल्ड प्राइस, सो दैट्स व्हाट वी विल सी. नेक्स्ट, एम्ब्रिज का स्टॉक एज आई मेंशन दे आर गोइंग अप. $65.46 इस वक्त एम्ब्रिज का स्टॉक है. दे वर एट अराउंड, अगर हम इसके 3 महीने की मार्केट को देखें, दे वर close to 68. They came down and now they are 65 and they are moving up. Enbridge का दूसरा फायदा मैं बहुत सी दफा बता चुका हूँ कि they are very good in giving out dividend. 5.9% dividend देते हैं ये, और which is really not bad. तो आपका जो स्टॉक प्राइस है along with जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, that's usually safe क्योंकि Enbridge is a very big company. It's not going to go anywhere. अच्छा जी, सेकेंड, इसके बाद हम आते हैं कैनेडियन नेचुरल CNQ के ऊपर. CNQ की इस वक्त प्राइस है $48.89. इट्स गोइंग अप ड्यू टू ऑल एनर्जी सेक्टर एंड ऑल दैट. दैट्स वेयर वी आर सीइंग अ वेरी सॉलिड ग्रोथ इन एनर्जी स्टॉक्स. बाय की प्रोडिक्शन है. EPS इसका 3.16 है, हम काफी दफा इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं. 4.72 इस वक्त इनका जो है वो परसेंट यील्ड है, जो डिविडेंड ये ऑफर करते हैं, विच इज रियली नॉट बैड. अगर आप कुछ साल में जो है वो डिफरेंट परसेंटेजेस के ऊपर अगर आप बैंक पर रखते हैं तो यू वोंट गेट मोर देन 4% और सो. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ यू आर गेटिंग 7%, 8% पर ईयर फॉर एनी स्टॉक, यू आर मेकिंग योर मार्क राइट देयर. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है Shopify. हमने Shopify को डिस्कस किया. इट इज गोइंग अप, इट इज डूइंग वेरी वेल. $189 का इनका स्टॉक है, और मोस्ट प्रोबेबली द वे इट इज वर्किंग इज गोना गो फर्दर एज वेल. ओवरऑल स्टॉक की जो इस वक्त मार्केट प्राइस है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको अभी चीप मिलेगा, लेकिन इट्स गोना गो अप क्योंकि इट इज गेटिंग बेटर इन द परफॉर्मेंस. ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड के ऊपर, और दूसरा हमारे पास है इस वक्त TSX की परफॉर्मेंस. S&P TSX कंपोजिट इंडेक्स जो है वो रिकवर हुआ अर्ली लॉसेस से, और फ्यूचर्स वर 0.3% up due to geopolitical risks erased. So that's exactly what we are seeing, क्योंकि जैसे ही
यूरोपियन और यूएस की टेंशन थोड़ी सी बेहतर हुई, स्टॉक मार्केट गेटिंग मच बेटर एज वेल। ग्लोबल पॉलिसी ईजिंग, रिलीफ ऑन यूएस यूरोप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रिस्क एसेट्स रिकवर एंड बूस्ट सेंटिमेंट्स into the midweek. So that's exactly what has been happening. Commodity gold price जो है वो that is gaining, और material and energy stocks are leading gains as well. अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं मैक्रो आउटलुक पे। ओवरऑल क्या रहा कनाडा का बिग पिक्चर टेकअवेज? TSX is hitting its record high, right? Slow growth रही, लेकिन they are getting into that level. 3% जो है वो persistent inflation जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। AI प्रोडक्टिविटी बूम हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट इस वक्त यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड इनहांस्ड बाय AI। दो चीजें इस वक्त चल रही हैं, एक सॉफ्टवेयर AI के ऊपर चल रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर देयर, बट इन्वेस्टर आर नॉट इन्वेस्टिंग in the software market of AI. Investors are investing in the hardware and storage market of AI. So that's the difference right now, and that's what we are seeing. Leadership में shift आ रहा है। पहले magnificent 7 जो है वो बड़ी कंपनीज हमने देखी थी, Amazon, Google and all that, but now energy and material are getting into that Mag 7 criteria as well. So that's what we are seeing कि जो leaders हैं मार्केट के सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। अच्छा जी, क्या हुआ यहाँ पे सेक्टर्स जो अभी हम थोड़ी सी प्लान कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया? एनर्जी न्यूक्लियर 10% ऊपर रहा, मटेरियल गोल्ड 6%, ये सब इस वीक की बात है। मटेरियल गोल्ड अगेन किनरॉस गोल्ड इट अप बाय 6%, wheat and precious material metal it up by 3%. So energy, metal and gold, that's exactly what we have seen being the market leader for this week. अच्छा जी, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, अगर आप मेरे लेफ्ट के ऊपर देखें अपने, तो ये TSX की स्लाइड है। इस वक्त जो कलर कोडेड है पॉइंट, जो सबसे जो हेवी कलर कोडेड है इन येलो, दैट इज एनर्जी। जो सबसे लोअर कोडेड है दैट इज रियल एस्टेट। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन, राइट? सॉरी, लोअर कोडेड इज यूटिलिटीज। ऑन यूएस मार्केट जो हैवी कलर कोड है दैट्स टेक्नोलॉजी, जो लोअर कलर कोड है दैट्स अगेन यूटिलिटीज एंड सम और रियल एस्टेट इज क्लोज टू इट एज वेल। सो रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त वैसे ही कनाडा यूएस में जो है वो काफी नीचे जा रही है। अगर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इफ यू हैव कैपेसिटी टू डू सो। कैनेडियन मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट एक तो जो है वो स्टेबल हो गया यहाँ पे, लेकिन जो प्रेशर है आपका मोर्गेज को लेने के लिए, दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक इनटू, क्योंकि दैट्स अ बिट डिफरेंस नाउ। बट इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दैट, और इफ यू कैन मैनेज इट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू लुक इनटू, बट डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू डू दैट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम गोल्ड का जो है वो दो स्टॉक चेक करेंगे। एक तो गोल्ड के शेयर हैं GLD, जो कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to gold price. Last time जब हमने डिस्कस किया था it was around late 300s, but now it is at 451 and it is going up as we go further, right? जैसे जैसे हम देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, और लास्ट ईयर ही 268 का था। अब आप ये देख सकते हैं कितना जंप आया है फ्रॉम लास्ट ईयर ओवरऑल। अगर ये पाँच साल के हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं एक साल के देखूँ यहाँ पे, सो ये $197 ऊपर आया और 77% का जंप है इसके अंदर। दूसरा ETF है गोल्ड का, जो कि XGD है गोल्ड का ETF। इसकी प्राइस इस वक्त है $62.65। ये अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस के। सो दैट्स हाउ यू कैन सी एंड दैट्स हाउ इट्स बीन वर्किंग। सो आज के लिए दिस वाज इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वी आर होस्टिंग नेटवर्किंग इवेंट, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपके पास सोशल मीडिया पे भी जो है वो वीडियोस चल रही होंगी। डू ज्वाइन दिस अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, इवन दो यू आर बिगिनर, इवन दो यू हैव सम एक्सपीरियंस, प्लीज ज्वाइन इन, क्योंकि इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डिफरेंट लोगों को इन्वाइट करें ताकि जो है वो हम जो स्ट्रैटेजीज है वो डिस्कस की जाए आपस में। एंड इट्स अ फ्री इवेंट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। कुछ चीज़ बेच नहीं रहे इसमें हम सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बुलाना चाह रहे हैं। जनवरी 30 को होने वाला है मिल्टन में शेरवुड कम्युनिटी सेंटर पे, और अगर आपको ज्वाइन होना है तो प्लीज लॉग ऑन टू द वेबसाइट www.investmentwall.ca। डू रजिस्टर ताकि हमें पता चले कि आप आ रहे हैं, एंड देन विल सी यू देयर।
Thank you so very much. Inshallah, I'll see you next week with the weekly update. Assalamu alaikum. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद हैं। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 Platinum Drive, Unit 99, Mississauga, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada.
Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Arden, need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My school is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My school, the School of Leadership. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, guarantee हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available.